These are just my little instruments that I'm just actually going to be standing on the side of because I'm the dummy here. The chef that I want to introduce on the show once again on Let's Cook. What's Let's Cook all about? It's so that people like you and me that are food enthusiasts that love eating food, हम सब खाना बनाना सीख सकते हैं in a very simple environment. और best बात है मुझे खाने को भी मिलेगा. I'd like to introduce once again Chef Ajay Chopra. Thank you so much for joining us. All right, Chef Extraordinaire as I call him. बहुत सारे chefs अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी, बहुत light and बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं. What are we making today, right? Light बोल दिया, मतलब आज ही fried dish खिला रहा था मैं light बोल दिया. नहीं, फिर भी light वाली feeling आती है. अच्छा. You know, in our entire series of Let's Cook, we've had like lots of fried chicken and all those kind of things, but they've never ever felt heavy. Oh, excellent. That's good to hear. Yeah. So today this is one dish which is called as a réchauffé dish. Now, in hotels they use this very funny term called réchauffé, which means reuse. चिकन तो इसको मतलब reuse करते रहते हैं आप क्या? नहीं ऐसा नहीं है कि हम reuse करते रहते हैं. जी. Point of the matter is that everything has a shelf life. It has to go through that shelf life and then it's done. जी. So अब चिकन टिक्का रात को पार्टी से बच गया. बिल्कुल. घर पे. जी. क्या करेंगे? सुबह गरम करके खाएंगे. Correct. So boring. Right. Let me show you a very. तो ये ready-made चिकन टिक्का भी हमने अपने आप बनाई है, जैसे नॉर्मल चिकन टिक्का का प्रोसेस होता है. You put a little bit of like a dressing on top of it. हाँ, उसे मैरिनेट करते हैं. हाँ. और उसके बाद बस ऐसे छोड़ उसको ओवन में पका दिए. ओह, वेरी सिंपल. Chop coriander, chop ginger, chop green chili, green chutney, chop onion, chaat masala powder, mayonnaise, chicken tikka, spring roll sheets. कल रात का बचा हुआ चिकन आई एम सपोजिंग टू से कि आपके घर में चिकन ये बिल्कुल फ्रेश है. हाँ, ये फ्रेश है. नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है कि घर में पार्टी होती है, चिकन टिक्का मंगाया जाता है और बच जाता है. मॉम कभी फेंकने नहीं देती या बीवी भी कभी फेंकने नहीं देती. तो उसका क्या करोगे आप? गरम करके खाओगे. बिल्कुल. वेरी बोरिंग. या तो आप बनाओ बटर चिकन या फिर खाया जा सकता है. बिल्कुल. या फिर आप ये बनाओ ये वाली रेसिपी जो मैं बना रहा हूँ. ओके. इसका नाम है चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स. ओके. चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स. So all I'm doing is just kind of chopping up the chicken. And this chicken tikka has a nice smoky flavor also. This is approximately कितना chicken? So this is about 3-4 pieces of chicken. Okay. Okay, not much. I'm just kind of roughly chopping it up. Right. So you should get a bite of the chicken tikka as well as you should have the chicken tikka which is छोटा करा हुआ. All of this goes into a bowl. Okay. So this chopped chicken tikka into the bowl. Now I'm going to just kind of make it more interesting. So chop dhania, chop hari mirch, which is my favorite. I eat lots of hari mirch. You can avoid if you want. No, I love it. थोड़ा सा chop ginger. हरी मिर्च से ना आदमी थोड़ा तेज भी रहता है. I think वो तीखापन जरूरी रहता है. Well, I love that. चलिए, anyways, lots of onions have gone in, ginger has gone in, coriander has gone in, green chili has gone in. You know, this is like a nice Punjabi tangy mixture. Now, this mixture is still very चाट टाइप ही बन रहा है. हाँ, ये बिल्कुल चाट टाइप ही बन रहा है और इसको आप चाहो तो चाट रूप में खा सकते हो. So चाट रूप में बन रहा है तो चाट मसाला जरूरी है. जी. Okay, and little bit of this green chutney. You know, our घर की green chutney. ये पुदीना या धनिया की है? धनिया पुदीना दोनों. Mix. And now I'm going to add some mayonnaise. You know, this mayonnaise is purely to get all of this together as a mixture, like a binding mixture, so that it doesn't run away. So I have with me spring roll sheets, which are available in the market. इसको थोड़ा सा ना आराम से ट्रीट करना पड़ता है, थोड़ा gently. तो ये फट जाएगा. नहीं फट जाती है. So I'm going to make a few spring rolls. I want. मेरे बचपन में actually a lot of tennis. हाँ. तो टेनिस में हम लोग चिकन सैंडविचेस और स्प्रिंग रोल्स एंड फ्रेंच फ्राइज ये हमारी फेवरेट्स होती थी ऑलवेज. तो बचपन से दिल्ली में अगर आप क्लब कल्चर में बिलीव करते हो, इफ यू बीन टू क्लब्स इन दिल्ली, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट क्लब्स, मैं जिमखाना क्लब्स की बात कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई स्प्रिंग रोल्स इतने पॉपुलर थे विद सम चिली सॉस. दिस वाज लाइक अ स्टेपल डाइट विद फ्रेंच फ्राइज एंड चिकन सैंडविच. ओके, सो नाउ दिस मिक्सचर, सो इसमें जस्ट अबाउट अ स्पूनफुल ऑफ दैट मिक्सचर. And Salil, I really want you to try this also. Sir, for sure. As in eating नहीं, बनाने के लिए भी. All right. So, लो मैं डाल देता हूँ इसमें. हाँ, नहीं डालना is easy. अच्छा. The wrapping part is a little difficult. So I want you to try it because I want the scare
to come out of you. That it's not that difficult. So we'll go step by step. Step 1, make it into a nice. Cylinder बनाया. Then go step 2 like this and make it nice and tight. डर के कर रहा हूँ but ठीक है. Then go with the edible gum. Edible gum लिया. Okay. Then roll the sides in. And then मैं ना वो adjusted वाला वो करता हूँ. ठीक है, पहले ना ज़्यादा टाइट नहीं है ना, एंड में ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइट कर दिया. हाँ, लेकिन हो गया. प्रॉब्लम ये हो गई सलिल, ओ. ये खुल गया. अब ये खुला तो ये तेल में गया तो ये ओह अच्छा नहीं तेल में डुबकी हो जाएगी. तो थोड़ा रीडू हो सकता है. हाँ बिल्कुल रीड हो सकता है. दैट्स व्हाई द टाइटनेस इज रिक्वायर्ड. सो ये जो था ना थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है. अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा हो जाए तो सिंपल चीज़ है, मिक्सचर निकाल दीजिए एंड देन जस्ट मेक इट नाइस एंड टाइट. इट्स जस्ट बेसिकली लाइक मेकिंग एन एनवेलप, जी. यू नो. सो हियर यू गो. सो सी सलिल, यू मेड अ गुड. जस्ट अबाउट. एक चिकन पीस ने मुझे मात दे दी यार. दैट्स अ फर्स्ट शॉट. Okay, so these nice crispy, lovely crispy spring rolls are. You know, so one thing I notice is हम लोग जो स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं या जो क्लब्स में मिलता है, वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाते हैं. यहाँ से अंदर का भी कुछ दिख रहा है. I like that. अंदर का ऐसे दिख रहा है because the spring roll sheet is nice and thin and it's still crispy. You know, so that's the beauty of having a nice spring roll. So tell me something, the spring rolls that are made otherwise because they constantly reheated, शायद उसकी वजह से different color हो जाती है. वो पहले से बना के रखते होंगे फिर इसको reheat करते हैं. Possibly. You know, the one thing that is wonderful about Chef Ajay Chopra साहब, उनको माउंटेन बनाने का बड़ा मन करता है. वो always ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं. So some homemade sweet chili sauce. This has got chili sauce, it's a bit of honey, a bit of chopped garlic and some chili flakes. We're just going to kind of, you know, just drizzle it on top. अच्छा, so the reason he's kept this is oriental flavor उन्होंने alive रखा है. हाँ. आप चाहो तो हरी चटनी डाल सकते हो. You can put some इमली चटनी जो मन करे, but he does put a dash of chaat masala. Because it's got chicken tikka. Perfect. So let's have a little taste on this. Okay. It's a little hot. It's so good. I know, but oh. मुझे दिल्ली की याद आ गई. Loved it. That is fabulous.